Hi guys, welcome back to my channel, the Nifty City, where we discuss Nifty, Bank Nifty, few stocks on a daily basis. So let's dive in. Let's see what we discussed yesterday, what's happening today, how the free Telegram group updates. So right now, what we're having again, we've had Nifty में तो बहुत अच्छी rally है. As you can see, again we've had a positive closing, which is good. बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्लाइटली वीकर, तो एक रेंज में अटका हुआ था बैंक निफ्टी. दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू प्ले ऑन द बैंक निफ्टी साइड टुडे. नाउ टुमारो is a very important expiry. Why is it very important? Because today we have the Fed event. ठीक है, most likely rate pause होने वाला है. That is something that is very much expected. Now what is important is कि commentary क्या आती है Fed chairman पॉल साहब की कमेंट्री कैसी आती है. इज इट हॉकिश, इज इट बुलिश? Depending on that, the market will react. So tonight we will see how the US market reacts, and accordingly the global markets will follow suit. Now, as per Indian domestic markets में क्या है? So what is the RBI governor said? Very important piece of information. RBI governor ने बोला है कि we have right now paused the rate hike. हमारा inflation has come lower than the expected, but still the deflation process is very slow, and the inflation rate is not as per our target rate yet. Okay, so pause है rates में, but that pause may not continue for a long time, is what our RBI governor is hinting at. Okay, so keeping this in mind, let's see what are the important levels as per technicals. ये हो गई macro news की बात. Now, how do we trade as per our levels? Now, as per our levels, what we have is, let me just put on the 15-minute chart directly because tomorrow is expiry. I'll open all the levels also. Okay, now what we have, yesterday also we had discussed this level 18,723 was a very important level. Okay, अभी निफ्टी में हुआ क्या था? And the opening, directly we saw a lot of pressure. ठीक है, Nifty had come down. Now, my clear message in the WhatsApp, in the Telegram group was also the same thing, कि 18,700 and 44,000 दोनों प्रेशर में है. अगर ये ब्रेक हुआ तो बहुत नेगेटिव डे हो जाएगा, नहीं ब्रेक हुआ तो साइडवेज डे हो जाएगा. नाउ बैंक निफ्टी वाज कंप्लीटली साइडवेज. निफ्टी ने थोड़ा रैली दिया है, बट not a very major rally, थोड़ा बहुत rally दिया, but anyways our trades were in bank nifty. Anyways, we'll come back to bank nifty. Now let's focus on nifty. तो अभी हुआ क्या है? Here we had a breakout of this level 18723. टारगेट क्या था हमारा? टारगेट ये था 18778 का. क्लोज बाय 10 पॉइंट दूर तक we have already touched. Okay, now what is important is कि tomorrow if we cross this level 18777, then what do we have? Then we will have a target of our all time high. अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. ये पॉसिबिलिटी है, नॉट श्योर वेदर दिस विल हैपन और नो, बट कीप दिस इन योर माइंड. नाउ 18,850 पे भी काफी अच्छी कॉल राइटिंग है. 18,900 पे, 18,850 पे, ठीक है, काफी अच्छी कॉल राइटिंग है. कल एक्सपायरी है. नाउ मोमेंट इधर का ब्रेकआउट आया एंड वी आर ट्रेडिंग समवेयर अराउंड हियर. एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन विल बी कि ऑल टाइम हाई को टच करेगा, because that is the next logical resistance. So don't be surprised कि अगर इधर ब्रेकआउट मिलके ऑल टाइम हाई टच होने के पहले पहले ये रिवर्स हो जाए. ओके, डोंट बी सरप्राइज्ड. ये एक बहुत ही पॉसिबिलिटी है. दिस इज हाउ, दिस इज अ टिपिकल बुल ट्रैप. सो दिस कीप दिस पॉसिबिलिटी इन माइंड कि एक फेक मूव आ सकता है. राइट, so what I would suggest is, let's see two scenarios. How do we trade in this scenario? Okay, scenario number one, we open flat. Okay, we open somewhere in this range only, that is 723 से लेके 777 के बीच में we open flat, and then we cross this. तो जैसे ही ब्रेकआउट पे we can take a trade, long trade here. जो भी ब्रेकआउट कैंडल रहेगा वो कैंडल का लो will be our stop loss. In case we open below 723, okay, we open somewhere here close to this low के पास we open. ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते ही we start moving and directly we cross this.
then a fake ka chance will be very high. So in this scenario, don't trade the breakout in case this happens. ठीक है? The more Nifty consolidates here and second half में breakout देता है, this is a much better scenario than a direct breakout. Direct breakout में momentum already नीचे से आ चुका है, momentum will die out. This is what usually happens. Obviously, we will have to see how the data is performing, how the price action is taking place, कोई recent swing टूट रहा है कि नहीं. So for that reason, I update everything on our free Telegram channel. If you're not a member of the free Telegram channel, the link is in the description. Go ahead, join our free Telegram channel. Okay. Now these are the levels for what we have for Nifty. So on the higher side, I've already told you what the scenario is. On the lower side, we have 723 as a support, trend line, major support. We have this 676, and then we have 636. Okay, below 636, things will become very negative. Now let's quickly dive into Bank Nifty. Bank Nifty में क्या है? Now Bank Nifty में what we did is ये opening ही हमारा इतना negative था, ठीक है, complete negative opening. So there was a lot of call writing at 44,200. Okay, lot of call writing. So we went with the momentum. 44,200 का मैंने call sell किया, ठीक है, with 44,400 का hedge. Okay, I always do option selling with hedge. That's what I prefer. So 44,200 का call sell किया. पूरे दिन ये खाली इधर था, प्रीमियम ईटिंग डे था, सो गुड प्रॉफिट देयर. इट हैज नॉट बीन एबल टू क्रॉस इट्स 200 EMA. इधर एक 200 EMA था 5 या 15 मिनट पे. नाउ व्हाट वी हैव tomorrow scenario as tomorrow scenario, the levels will remain the same in Bank Nifty because there has been no action today. 44,231 is a major resistance. इसके ऊपर 44,350, 44,500 के targets है, what we've been talking about the entire week. On the downside, we have this target 43,850 के नीचे we have 43,706, 706 के नीचे we have 43,400. Okay, so these are some of the levels that we have. Now one thing that I would like to discuss with you guys in Bank Nifty is very important thing, that before I discuss that, like दबा दो वीडियो पे. if you're liking the analysis, please hit the like button. एक सेकेंड रुकते हैं, लाइक दबा दो, प्लीज दबा दो. ओके, शेयर द वीडियो इफ पॉसिबल. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ADR, ATR, sorry, average true range. Okay, now I'm going to discuss, I'm going to make an entire video on it, but what I can tell you guys right now in this expiry analysis video is there is a massively big move coming. Okay, Bank Nifty, as you can see, has been in a consolidation for a long time. VIX is at an all-time low. So there is going to be a massive move. What we have to catch is we have to catch the trend on the right side. So there is a lot of money to be made. So if you are in losses, don't get too worried about it. कि option buying में loss हो रहा है. Very soon, option buying is also going to give you a lot of profit. Now coming down to the stocks that we have. Okay. Now you can see, obviously, bull market mein, we are in a bull market currently. So there are a lot of breakouts happening on a daily basis. So there are a lot of stocks. So what I would suggest to you guys is pick and choose. Okay. At any point of time, 3 या 4 से ज़्यादा stock options में trades open मत रखो. It's very difficult to manage. This is what I'm telling you from my experience. So pick and choose. And low VIX में क्या करना है हमको, जैसे ही प्रॉफिट में हम दिख रहे हैं, जैसे ही ट्रेल टाइटली, ठीक है, बहुत टाइटली ट्रेल करना और प्रॉफिट्स फटाफट लेना है. नाउ लेट्स कम डाउन टू द स्टॉक. फर्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज Zydus Life. ओके, नाउ यू कैन सी हियर Zydus में क्या है. व्हाट आई लाइक इज लंबा कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट. ओके, दीज काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स टेंड टू सस्टेन. अब ये एक लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है एंड नाउ लुक एट द वॉल्यूम. ठीक है, सो द ब्रेकआउट इज सपोर्टेड बाय वेरी गुड वॉल्यूम. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, if you see RSI is on a uptrend. So all the 2-3 points that we have all are in sync in Zydus. So this is the level which it has given a breakout of 529. Stop loss का रहेगा. Now if I open my moving averages,
यू कैन सी 50 मूविंग एवरेज हियर, इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो 532 के आसपास की एंट्री एंड 500 का स्टॉप लॉस. Target I will keep open. Now, if I go on to the monthly charts and show you guys, targets क्या हो सकते हैं? Obviously, here we will get a small resistance, 558, 550 के आसपास, and then I am looking forward to at least 600 का target. Okay, so 1:2, 1:3 का risk reward ratio बैठेगा इधर. Now let's check out the other stock that we have. Now this is Oracle. Okay, Oracle में क्या हो रहा है? Again, you can see Oracle में एक लंबा consolidation, उसके बाद 3 back-to-back very strong candles, okay, with very large volumes, right? So again, this is a breakout stock with large volumes. Now what we have here is, what I want to show you interesting fact. अगर मैं ये chart को zoom out करूँ, okay, you can see there is a gap pending here. Okay, there's a unfilled gap which is pending here. Now what we have done is a complete एक राउंडिंग एंड हैंडल, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हो चुका है इधर. सो माय बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस चार्ट इज दैट दिस शुड गो एंड फिल द गैप. ओके, सो ज्यादा अपसाइड इधर बचा नहीं है. वी आर लिटिल लेट इन एनालाइजिंग दिस स्टॉक बिकॉज ये ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, तो इसमें बहुत ही कम मार्जिन बचा है 3953 का. ऑब्वियसली इफ निफ्टी बिकम्स वेरी बुलिश, then we can see in Nifty में रैली हुआ तो this can break out also further, but first target will be somewhere around 3950. okay, so छोटा target है which low wicks setup में ये suit भी करता है. Now expectations from tomorrow, my expectation is from Bank Nifty. okay, Bank Nifty can give you a big trade. इतना याद रख लेना. बैंक निफ्टी में एक बार डेटा भी देख लेते हैं, डेटा में कैसा लग रहा है. Now you can see डेटा में there is heavy call writing. 44,200 पे था ओपनिंग में इधर, then as the day went by 44,000 पे build up हो गया. Okay, now 44,000 is the last line of defense. इसके नीचे you will see a big fall. On the upside we have lot of resistances. निफ्टी में क्या हाल है? निफ्टी में उल्टा हुआ है. 18,700 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, बहुत हेवी पुट राइटिंग हुई है 18,700 पे. सो नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक अ डिफेंस एंड कॉल राइटिंग इतनी ज्यादा नहीं है डायरेक्टली, फिर 18,900 पे इतनी कॉल राइटिंग हुई है. सो ऑल इन ऑल माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टुमारोज एक्सपायरी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मूव इन बैंक निफ्टी. अगर कल बैंक निफ्टी में मूव नहीं आता है तो नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी धमाकेदार फॉर बैंक निफ्टी. एनी विच वेज एज ऑप्शन बायर्स यू गाइज विल बेनिफिट. ऑप्शन सेलर्स हम तो ट्रेड करते ही है एवरीडे. सो दैट्स अबाउट इट. कल एक्सपायरी है, यूएस का इवेंट भी है आज. सो ऑल द वेरी बेस्ट, ट्रेड सेफली. वी विल बी इन टच ऑन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल. प्लीज हिट द लाइक बटन. ऑल द बेस्ट गाइस.